नमस्ते दोस्तों। आपको याद होगा सितंबर 2021 की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, जिसमें यह प्रस्ताव लिया गया था कि 1 जनवरी 2022 से कपड़े पर जीएसटी की वर्तमान दर 5% को बढ़ाकर 12% कर दिया जाएगा। मगर गुजरात राज्य के वित्त मंत्री के पत्र पर दिसंबर 31, 2021 को जीएसटी काउंसिल की एक आपातकालीन यानी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जो कि जीएसटी काउंसिल की 46 यानी 46वीं मीटिंग कहलाई गई, जिसमें कपड़े पर जीएसटी दरों को यथावत रखने की घोषणा की गई। डेफर्ड वर्ड काम में लिया गया। उस वक्त वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रेट डेफर करने के बारे में क्या कुछ कहा, ये आप उन्हीं की ज़बान से सुनिए। Yes, no decision on it. No. Okay, 175. Ma'am, Shubham here from the print. Ma'am, what was the rationale given by the states, and especially the letter that came to you, on why there should be a deferment on this, on GST on textiles to 12%? Well, the letter per se didn't have any rationale except for saying that it may not be the best time to do it now. Industry is in difficulty, and fairly generic. The industry, while representing inter alia, felt that there could be a temptation not to come into the system, meaning into the formalized system, and the immediate pressure could mean that many of them would go into informal ways of doing business, and please, it may not be possible now to do it. That was one of the things which, and also the second was it would burden the lower end of the buyers. Well, that wasn't the intent. That wasn't the intent, and it wasn't decided by any one person. It wasn't decided by any one minister, nor was it decided alone by any one minister, nor was it decided by one sitting of the council. Several sitting of the council, several aspects of what governs inversion, and several consideration, honestly even that consideration that would it hurt the end consumer, were all in detail discussed. And detail discussed each sitting, as I said. And at no point in time did anyone question the arguments of what an inversion does to the tax structure. Not at any one point in time in any one of the several sittings was there this question that no, the arguments being put forward are not valid. Actually, the inversion is not hurting revenue, and the inversion is actually incentivizing any one particular section or anything of that kind. So the reason why I'm elaborating this in the reply to your question is, there is a complete consensus that inversion hurts everybody. However, that one particular layer within the entire value chain of the textile may end up having some of its items becoming slightly more expensive. When the details actually have been discussed, as it prevails now, the inversion gets corrected if there was to be a rate, let us say, of 7 to 8%. The GST structure gives you only a 5% or a 12% or an 18% or a 28%. Some exceptional one or two categories would have 1 or 2% down, which is just exclusive to them. In this, the understanding the rationale which goes into the mathematics of it clearly identifies, and even there is a sense that if there were to be a rate which is 7 or 8%, you would probably correct the
imbalance or the inversion. However, these are nitty-gritties and these are details of the whole thing. The overriding push was probably because a certain segment of the industry felt it would immediately cause an increase in the price. And there's no arguing, if that's the case, we'll have to. And that is why it has gone back to the committee to actually do more in-depth study and come and present it to the council all over again. महोदय बतला रही है कि जीएसटी काउंसिल ने 5 से 12% जीएसटी को इसलिए डेफर किया टेक्सटाइल पे कि उस वक्त इंडस्ट्री बहुत तकलीफ़ में है, यह सही समय नहीं है और ये बिल्कुल पर्याप्त जुनैन कारण हमें महसूस होते हैं। और यदि जीएसटी के रेटों को उस वक्त बढ़ा दिया जाता तो बिज़नेस में इनफॉर्मल वे ऑफ बिज़नेस यानी टैक्स की चोरी चालू हो जाती और इस तरह जो अंतिम उपभोक्ता है कपड़े का उसके ऊपर एक अतिरिक्त भार आ जाता और कपड़ा महंगा हो जाता। उन्होंने विस्तार में यह भी बताया कि जीएसटी काउंसिल के कई सदस्यों ने मिलकर यह निर्णय लिया है और यह सर्वसम्मत निर्णय है। यदि आपने निर्मला जी सीतारमण का वक्तव्य ध्यान से सुना हो तो मैं चाहूँगा कि आप उसे यदि ध्यान से न सुन पाए हों तो पुनः सुनें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन भी दबावें। साथियों, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है, अतः आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर हमें बताएं। साथियों, यदि आपने सीतारमण जी का वक्तव्य ध्यान से सुना है तो इन्होंने कहा है कि कपड़े पर जीएसटी के रेट 7 या 8% होने से इस व्यवसाय के संबंध सभी वर्गों को राहत मिल सकती है, पर मुश्किल ये है कि जीएसटी में 7 या 8% का कोई स्लैब नहीं है। साथियों, यदि आप मेरे चैनल को नियमित रूप से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि जीएसटी काउंसिल की इस प्रेस ब्रीफिंग में जैसा सीतारमण जी ने बताया, ऐसा सुझाव मैं उससे पहले भी अपने वीडियोज़ के माध्यम से देता रहा हूँ। यदि कपड़े पर जीएसटी बढ़ानी ही है तो बजाय 12% जीएसटी करने के इसे 7 या 8% कर दिया जाए। यदि आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल natwarlalbaheti को यूट्यूब पर आप सर्च कर इन वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण तथ्य को रखना चाहता हूँ कि उस वक्त इस प्रस्ताव को डेफर तो कर दिया गया और कपड़े पर जीएसटी की दरों को यथावत रख दिया गया, मगर ये जो प्रस्ताव है डेफर करने के बाद पुनः GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया था और इस GOM को ये रिपोर्ट फरवरी 2022 के अंत तक जीएसटी काउंसिल को सौंपनी है। साथियों, क्या आपको लगता है कि मार्च और अप्रैल में किसी भी समय कपड़े पर जीएसटी दरों को संशोधित कर वर्तमान 5 से 7 या 8% की दर की दायरे में इसे लाया जा सकता है, या पहले की ही तरह 12% के मूल प्रस्ताव को फिर से लाया जाएगा? यह सब भविष्य के गर्भ में है। वस्तु स्थिति जानने के लिए हमें मार्च माह का इंतज़ार करना होगा। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आपके दोस्त को इजाज़त दीजिए।